जो मर्सिडीज में आप आ रहे हैं वो तो आपके पेरेंट्स की वजह से है, Yeah. जो बाइसिकल पे आप आ रहे हैं वो भी आपके पेरेंट्स की वजह से है। हम्म। तो आपने क्या अचीव किया है? बिकॉज एजुकेशन एक चीज़ है जिस पे आपने कसम खा ली है कि हमने नहीं करना, जो मर्जी हो जाए, तालीम नहीं देनी। वी इन टर्म्स ऑफ रॉ टैलेंट, आई थिंक पाकिस्तान's DNA is probably the best I've come across in the world, without a doubt. Alright, if you could implement one new educational policy in Pakistan, Elite have to go to public schools. hello and welcome everyone to another episode of the Digital Pakistan podcast. My name is Asma Ijaz Khan, your host for the series, और आज हम आपके लिए लेके आए हैं काफ़ी interesting episode. In the last two episodes, we discussed the digital landscape of the country with respect to policy making, policy interventions, and obviously corporate innovation. And one thing that stood out to us the most was कि काफ़ी लोग rely करते हैं on the youth segment of this country. We believe that as they grow up, they're going to bring us economic stability, growth, and obviously prosperity. But that's a lot of expectations on you people, right? तो इस हिसाब से we thought, why don't we invite someone who works very closely with the segment and can help us understand कि what are the challenges that this segment faces and how can we equip them to become a better version of themselves so they can actually live up to the expectations that we have of them. वैसे तो उनकी achievement list काफ़ी लंबी है and I will request him to touch upon those achievements during his introduction. But right now he's associated with Beacon House National University as the Vice Chancellor. Hello and welcome to the podcast, Dr. Mohit. Thank you for having me. Thank you so much for making time and coming from all the way to Lahore. Like यहाँ पे आप आए, हमें Not at time all. दिया. It's a very simple podcast. We have 3 segments: past, present, and future. और उसी space में हम आपसे सवाल पूछेंगे. The start obviously is always introduction. You're a famous person. आपको हम Google पे टाइप करके सर्च करेंगे तो we'll find a lot of things. But we still want you to touch upon your major achievement. But इसके साथ साथ tell us a bit about your own self. Who is Mohit as a person? How did he end up in this space? And was this always his dream or it just happened? Thank you. So, first of all, I don't know, famous or infamous, that's relative. If you Google, you'll find everything. But I think Mohit is a nobody, actually. I'd love to be known as a nobody, operate as a nobody, behave as a nobody. Because I think one of the biggest ills of Pakistani society and human nature is ego. Yeah. This idea that I've achieved something, so I must be better than others, is the perfect recipe for your demise intellectually. So, frankly, I am nobody. I mean, I haven't done anything extraordinary. It's luck. Allah Ta'ala is kind. कई दफ़ा आप चीज़ें सोचते भी नहीं हो जाती हैं. For somebody my age to be the national security advisor of a nuclear power, I mean, I haven't done anything to deserve that. To be, the vice chancellor of a leading university, haven't done anything to deserve that. So I think one has to be humble. You should know कि आप अपनी कोशिश करते हैं and बाकी जो होना है, destiny is there for you. The only thing I always say is there is no success without hard work. Even those who are doing things they are not supposed to be doing, even a thief, the best thief in the profession would be the most hardworking one. So my only, I think the one thing that I carry with me is just work as much as you can and hope for the best. But I don't think I'm anybody, honestly. Still, tell us a bit about your journey, आपकी academic journey वगैरह भी. How did you get to this point? Yeah, journey. Basically, I belong to a medical family of three generations down. Medical family from Lahore. So growing up, there was no other profession that I knew of. No other profession my parents expected of me. And then I got into this bad habit of playing golf, and got decent at it, good at it. Represented Pakistan, captained the junior team. And so, out of nowhere, I got this scholarship to go and play golf for 4 years in the US. That was the only way Wow. my parents agreed to send me. I had no Okay. background in the US, nobody, no family, nothing. So, wahan se it sort of started. I went there. I wanted to actually be a professional golfer, but at that age, everybody thinks they're brilliant. I didn't do medicine because I wanted to play golf at that time. So, and then my second love always was the study of societies, I would say. Like मैं अपने घर में, I would actually put out this newspaper, just write by hand at that time and put it out. It was all the house gossip till my Wow. parents said enough is enough. And Wow. so I think there was something in me. So I then, went into political science, IR, did my master's.
then my PhD from Boston University. Um, Worked in Pakistan for a few years, then went back, and then spent my entire career in policy research and academia. So actually, the aberration for me was the NSA job, and now I'm probably back where I've belonged for most of my career. So that's the journey. Again, I don't think anything extraordinary, but a lot of things falling in place as they should have, or again, God's been very kind. Was coming back to the country part of your plan, and like, are you one of those people who at some point then regret it also? Okay, maybe bahar hi acha tha, because right now everyone is leaving the country, right? Yeah, Pakistan makes you regret a number of things, but there's something about this country. Once it's in you, you can't lose it. I thank and blame my mother for it. The patriotism that I have um, is just innate. I mean, I can't do anything about it. I think the single best decision I made in my life, which was a personal decision, was to come back. It had nothing to do with, many people think that I came back because I had the NSA job. That came much later. I was here Mm. much before. I joined LAMS. I was teaching there. So, मेरे लिए regret is not. I just it shouldn't be. You do what you do. But अगर मैं वापस ना आता, तो I would have been in a very different, much more cozy, much more Yeah. predictable place. Yes. But I came back for family reasons. I think it's exactly the right decision, and I mean, I think one has to have one's priorities right, and for me, nothing comes before family. But abhi bhi, you think you're driven by this desire to make this country a better place? क्योंकि अक्सर जो Yes, लोग यहाँ रहते हैं, maybe yes, that's the only reason, right? Otherwise, yeah, yes. maybe lack of resources. I can't leave the country, so I just stay here. But some of them still do believe that we can make a difference and improve this place. I'm driven by the guilt of having had a chance to fix things, and clearly they haven't been fixed. And there are a lot of sort of cogs in the wheel, so a lot of things have to come together. But absolutely, look, I mean, if you're in any environment and you say it doesn't bother me, Yeah. then there's a problem. There is good, there is bad, but we've got to keep working. I mean, it's as simple as that. I'll tell you, I don't have a political bone in my body. That's the other thing. I just Mm. don't understand politics. I don't I don't appreciate the nuances of politics. I'm a pure professional. And from that perspective, there are endless opportunities. When things are not as good as they should be, then you have more opportunities to fix things. So, Yeah. yeah, that drives me. This current job, a lot of people ask me, कि जी NSA, तो अब आप ये क्यों कर रहे हैं? Is because the future of Pakistan lies in the under 25. Yeah. If, we've done what we had to do, me at least, not you, but I think if we don't invest in the younger generation, and by investing in them, I don't mean giving them a degree and giving them, education. If we don't open their minds, if we don't teach them what it is to be a responsible citizen, if we don't actually teach them how to think and be tolerant about diversity, we are in serious trouble as a country. So that's where I think I am right now. Acha, the thing is, because it's a tech podcast, do you have any specific tech trends and products that you really love and you feel like at this point, aapki maybe in your role also, they help you do a better job, or maybe they're helping the society be a better place? Technology wise, Yes. अच्छा टेक्नोलॉजी तो देखें सोसाइटी में तो ऑब्वियसली डज सो मेनी थिंग्स वी डोंट इवन नो आप you're sitting and thinking of it from a perspective of digitization. Think about medical science. I mean, look at what it's doing to humans. Look at life expectancies. Look at quality of life of humans who may have ailments that have been fatal, may Yeah. still be fatal, and on and on. I mean, technology has really changed the world. I mean, the pace of travel and what you can achieve in a particular given set of time. So ये चीज़ें तो, I mean, incomparable to the past. Um, मेरे in my I'm not, I can't say I'm a tech savvy person, but I'm obsessed with data and dashboards. So where I live, whatever job I do, you will find trackers, you will find dashboards, you will find data which tells me what decisions to make, with a very strong element of subjective qualitative input. I'm a Mm. social scientist at the end of the day, Yeah. right? I'm a trained political scientist. I study societies, I'm a student of politics. When human nature comes in, only dashboards are not enough. If you don't use technology for data, you're Yeah. missing something huge. So the art of decision making today to me is for leaders to be able to tie in data
with context. Those who can do this well actually make good decisions. Those who can't either um, completely ignore the contextual reality or frankly are driven by what I call जुगाड़. हर चीज में आपने एनेक्डोटली एक फैसला कर लिया, मेरा ख्याल है ये कर लेते That's half the हैं. population of the country, no? No. That's 99% of the population, including decision making of the country. यही तो problem है. Yeah. So in my world, a lot of people talk about strategic clarity. Strategic clarity कहाँ से आनी है अगर आप डेटा पे बेस ही नहीं कर रहे अपना फैसला? Or if one person, 10 people, 20 people can decide today this is good, tomorrow something else is good. That's no way to make decisions. So I try and in every decision I make, the two have to be combined. But do you think on like a national level it's a competence issue? Yeah, we're just not interested in finding out the solutions the right way. When you say कि हम डेटा पे तो rely ही नहीं करते, अपनी मर्जी से बस decision ले लेते हैं. I mean, I think you just have to have the right people for the right job. If you ask me to fly a plane, I'll crash it with 300 people in it. So, we have had a history of putting mediocrity before meritocracy. तो mediocrity है 3 out of 10 caliber पे चलाएं तो 3 out of 10 रिजल्ट आ जाएगा. मांगते आप 9 है तो 9 तो नहीं आ सकता, और 9 तो अब आप प्रोड्यूस भी नहीं कर रहे, बिकॉज एजुकेशन एक चीज़ है जिसपे आपने कसम खा ली है कि हमने नहीं करना, जो मर्जी हो जाए, तालीम नहीं देनी. This is a very interesting point. हम इसको आगे भी डिस्कस करेंगे, but we'll move on to our first segment, which is the past. इसके लिए go back to being a 20-year-old and हमें बताएं उस point पे what did technology look like, what kind of devices did you interact with, cell phones थे नहीं थे, आप क्या करते थे उस ज़माने में? Look, I mean, technology today and at that time, it's incomparable, right? आपकी generation ने जो technology, you've grown up with technology. For us, it was a luxury. I mean, I still remember the first machine I ever used was this IBM का Commodore 64 उसको कहते थे. Very basic. I don't even know if it's called a computer anymore. But I remember you have video games on these big floppies that would malfunction every 10 minutes. But the video games were pretty much automated and you'd sit and move a joystick pretending that you were playing. So wahan se shuru hoke, and you've ended up where you have the modems came for internet. Pakistan mein jab internet aaya, early 90s, I guess you took an hour just trying to get online and 5 minutes later it'll disconnect. Email was a revolution and a revelation. So cell phones, this big briefcase like cell phones which you had to carry around. So it's incomparable. But life went on. Yeah. You leave the house saying Allah Hafiz. It was a real comment at that time because Allah Hafiz. I mean, you'll come home and we'll meet again. Life was slower. You got more time perhaps to think. This constant pressure of picking up the phone whenever it rings wasn't there. But obviously, if you use technology properly, the amount of progress or the pace of progress or what you can achieve as a human race, technology is enabling it every single day, without a doubt. And do you think as a society we are utilizing it to the best of our abilities, या हम बस Instagram और TikTok तक stuck है? We haven't made our society capable of innovating. अगर आपने तालीम नहीं देनी तो आप इनोवेशन कहाँ से लाएंगे? अगर तालीम की डेफिनेशन एक पीस ऑफ पेपर कॉल्ड डिग्री है तो वेयर डज इनोवेशन कम फ्रॉम? सो यूनिकॉर्न्स कितने हैं पाकिस्तान के आज तक? छोटे छोटे अजीब अजीब से मुल्क, नाम भी नहीं आपको आते, उनके यूनिकॉर्न्स हैं. इनोवेशन कहाँ है पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी की, राइट? इवन दोज हु कॉल themselves leaders in the private sector, क्या है? बेसिकली यू गो एंड आस्क समबडी एंड दे से जी हम कोडिंग, बैक ऑफिस सपोर्ट, कॉल सेंटर, लोएस्ट एंड ऑफ द वैल्यू चेन, बिगेस्ट नेम से आप बात करें, वो कहते हैं जी बूट कैंप कराते जाएं. कराते रहें, वॉल्यूम आपको चाहिए. तो एआई ने 10 साल में ये सारी मैकेनिकल जॉब्स खत्म कर देनी है टेक्नोलॉजी की. देन वेयर विल यू गो? वी हैव ए हिस्ट्री ऑफ गेटिंग स्टक एट द लोएस्ट एंड ऑफ द वैल्यू चेन. देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, हमें ये बहुत शौक है बात करने का कि देखिए जी हम टेक्सटाइल्स हमने 50 साल पहले शुरू की, फैब्रिक बनाते थे, आज तक वहीं है. बांग्लादेश कहाँ पहुंच गया, वियतनाम कहाँ पहुंच गया. आईटी में भी आपने वही गलती की है. You've got clientele from around the world who are at the lowest end of the value chain. Simplest tasks आपको दिए हैं, बाकी जो इनोवेटिव टास्क हैं वो बाकी दुनिया कर रही है. तो जब आप इंडस्ट्री से भी बात करते हैं, एज यूनिवर्सिटी व्हेन आई टॉक टू इंडस्ट्री, द आंसर इज भाई हमारे तो क्लाइंट्स ये हैं, हमें तो इस तरह की स्किल सेट चाहिए, राइट? सो अकेडमीज, बूट कैंप्स, ट्यूशन सेंटर्स, यू आर जस्ट churning out people with no real creativity, with no real effort to make them think out of the box and solve problems. आप गूगल, माइक्रोसॉफ्ट से नौकरी लें सिलिकॉन वैली में, वो तो आपसे डिग्री की अब बात ही नहीं करते.
Yeah, They're asking whether you're creative, whether you can solve problems. तो वो true. कहाँ से आएगा? तो वो जब तक आप ट्रेन नहीं करेंगे, it's the same point. 3 out of 10 is not going to deliver 9 out of 10 for you. But do you think it's a weird combination of ideologies? I don't know. एक तरफ हम लोग इस तरह की मीनियल जॉब्स लेते हैं और हमें हमारी सेल्फ वर्थ इतनी कम है कि हम समझते हैं कि दिस इज द बेस्ट वी कैन डू, बट एट द सेम टाइम अगर आप इंटरनेट पे चले जाएं, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में बैठे, इफ वी टॉक अबाउट कंट्रीज लाइक बांग्लादेश या इंडिया, द काइंड ऑफ थिंग्स दैट वी से अबाउट देम, वी डोंट कंसिडर देम above us in any way at all, right? Even when there is like proper data supporting the fact that वो कब से हमें क्रॉस कर चुके हैं, तो इस एरोगेंस में और इस सेल्फ वर्थ इशू एट द सेम टाइम से फंसे हुए हम तो कुछ भी नहीं कर पाते हैं. देखिए prejudices, every country, every society, every nation has its own prejudices. हमारी we have our own, they have their own. But look, fundamentally, societal progress will come through introspection, not through pointing fingers at others. Yeah. Of course, others haven't been kind. Pakistan's not an easy country to run. Pakistan's not an easy region to be in. But we still have to rise Yeah. given all the constraints. ठीक? So, what are we doing wrong? What could we do differently? Those are the questions we have to answer. Do we have the right people doing the right thing at the right time? Are we using technology properly? Are we masking our own broader insecurities by controlling technology? Yeah. It's like preventing the flow of water. How many times will you create dams when you need water flow to bring Mm. water to lower riparians? I mean, that's the argument here. Technology is going to emancipate you if you allow it to do what it needs to do with controls. Yeah. You must regulate, but regulate where regulation is needed, allow facilitation where facilitation is needed. I think this is the fundamental difference between us and other societies. Then why do countries like China, even with those strict regulations, are still doing so much better than us? I'll tell you why. Because they control when it comes to conversations of the state and the political space. But in terms of allowing the private sector to harness Yeah. technology and innovate right to the lowest levels of local government, they are the biggest facilitators you'll find in the world. So don't confuse political goals, rhetoric, societal makeup with what countries are doing with the economy. I don't know of any country in today's world where technological revolution is consistently coming through the public sector. It may Mm. start with the public sector. A Yeah. lot of your internet came from the defense industry of the US, etc. But then it has to be harnessed through the private sector without this fear of what technology will do to you. So do you think our institutions can't differentiate between these two things? Unki regulation, it goes way beyond. No, because regulation is the illusion of keeping control. It's not only in technology. हमारी society overall आप घर से शुरू हो जाए. Mm. Right? It's hierarchical, right? If you don't listen to parents, Yeah. if you argue with parents, there's something wrong with you. If you argue with teachers, there's something wrong with you. Now, sometimes there is something wrong with you. If you're going beyond a point, arguing for the sake of argument or feeling that you're entitled, there's a problem. So, वहाँ पे आप control लाते हैं. So, उस तरह technology में भी control आएगा. लेकिन जहाँ से आपने innovate करना है, Mm. वहाँ पे अगर आप regulate करेंगे. So, as a father, if I feel slighted by my daughter or my son telling me आपने गलत बात की है, Yeah. then I'm conflating. I need to facilitate that conversation, but I'm regulating because I'm Mm. insecure. But where they're crossing the line and I know it's going to be harmful for them, then I must regulate. ये differentiation जो society सही कर लेती है, वो technology से benefit कर रही है. So that's where we need to look. You said you're a student of society. आपने बाकी मुल्कों में भी इतना time गुजारा है. Do you think compared to other countries, as a nation, we are generally way more insecure than the rest of the world? We, in terms of raw talent, I think Pakistan's DNA is probably the best I've come across in the world, without a doubt. You Mm. can take any country, but raw talent, the concept, the enterprising nature with that raw talent, I think we are ahead of everybody. As soon as you structure it and put it in a system, Mm. we are probably worse than anybody because that system stymies any opportunity to go outside the box. Yeah. And if you are unable to go outside the box, then you will maintain the status quo. And status quo for a country where things are going well is fine. For a country where we need change and immediate change and a lot of change in a lot of areas, obviously it's going to hold you back. So, insecurity, I think, is relative, depends on which sector, what socioeconomic strata, etc. But I do think that we haven't been able to harness our raw talent and produce the outcomes that somebody with the kind of DNA of our society
must. So, these kind of societies ultimately produce flashes of brilliance with a lot of mediocrity. And the best example I can give you is cricket. Yeah. The entire nation hopes, prays, and is desperately obsessed with seeing consistently good performance. Yeah. What you get every time for the past 40 years I've been following it is flashes of brilliance that keep hope alive but don't repeat themselves. That is a microcosm of what our society and system is. एंड द डिस्कशन उधर भी सेम कि टैलेंट आता है आप खुद खराब कर देते हैं सो वी आर आवर ओन एनिमीज टैलेंट देन नर्चर नहीं होता ना। आप अगर एक रॉ टैलेंट स्ट्रीट से लेते हैं तो स्पोर्ट्स अब एक साइंस है। देखें, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ज़रा सोचें पाकिस्तानी सोसाइटी के बारे में। आपने टेक्सटाइल शुरू की 50 साल पहले। यू वर द किंग्स ऑफ टेक्सटाइल। आप फैब्रिक बना रहे थे। आज तक फैब्रिक ही बन रहा है। बांग्लादेश किधर पहुंच गया, वियतनाम किधर पहुंच गया। आपने टेक्नोलॉजी शुरू की आईटी में। यूर सेइंग आईटी बूम, आईटी बूम, आईटी बूम। वो आईटी बूम है क्या? आपने बूट कैंप शुरू किए, ट्यूशन सेंटर्स, और आप लोएस्ट एंड ऑफ द वैल्यू चेन पे मैकेनिक्स प्रोड्यूस करते जा रहे हैं। 10 साल बाद एआई ये सारी जॉब्स को वाइप आउट कर देगा, फिर हम किधर जाएंगे? जीरो इनोवेशन। ऑल एनीबडी वांट्स राइट नाउ इज क्लाइंटेल जो है हमारे पास, वो लोएस्ट एंड ऑफ द वैल्यू, कोडिंग, बैक ऑफिस सपोर्ट। अगर मैं बीएनयू में 4 साल एक स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, आई एम सॉरी बट I'm not giving them a degree to be coders for the rest of their lives or back office support or calls. I want them to be innovators. उसकी स्पेस ही कोई नहीं। जब आप वो बात करें होता है डॉक्टर साहब ये किताबी बातें, इट्स नॉट किताबी बातें। दैट्स वेयर द वर्ल्ड इज अल्टीमेटली गोइंग। एवरी पाकिस्तानी इज बीन टोल्ड कि साउथ कोरिया आया, वो आपका 5 ईयर प्लान ले गया शुरू में, वो कहाँ हम कहाँ। एमिरेट्स को पीआई ने बनाया। एमिरेट्स, दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस। प्रॉब्लम ये है कि वी आर वेरी गुड at using our raw talent to solve simple problems and be first movers. As soon as you create structure and a science out of that art, we are nowhere. Yeah. Single best example, again, perhaps before your time in that sense, we were world champions in hockey 1 year after another year. What changed? लोग कहते हैं जी वो शौक खत्म हो गया. No, you went from grass to astroturf. Grass was skill, astroturf was science. You're finished. Right? Yeah. ये प्रॉब्लम हमारी अक्रॉस द बोर्ड है। कंप्लेक्सिटी से हम भागते हैं क्योंकि वहां पे आपको स्पेस देनी पड़ती है टू द मोस्ट इनोवेटिव माइंड्स, वो माइंड्स जिनको मेरिट पे आपको आगे लाना पड़ता है। जब आपकी सारी इथोस ही मीडियोक्रेसी है तो फिर आप वो काम नहीं चाहते, तो फिर वो काम नहीं होते। Interesting conversation, but we'll lighten the mood a bit with a gaming segment now called Rapid Gaming. Fire. Okay. Okay, you have to just give us answers very quickly. Are you ready? Sure. So what technology do you think is overhyped? AI, for now. I think this idea that AI is going to be the next human being and human beings are finished, I think it's very hyped. Nature of jobs will change, nature of thought patterns will change, but I think we'll survive. Okay, interesting. What's the most surprising thing you've learned from your students so far? How confident they are of everything they know Okay. without having knowledge. And that's not my students, that's the younger generation across the board. Gen Z. Everywhere you go, it's this conversation about, I know, thus I must get XYZ without the entitlement. climbing the ladder through hard work. That's the negative. But they're the most informed generation. They keep you on your toes. You go to a class and teach and you're not prepared, you're They'll find massacred. All right. If you could implement one new educational policy in Pakistan, considering there would be no opposition, what would that be? Elite have to go to public schools. Your public school system will pick up in 1 year. Yeah, I think we do need that though. If you had an autobiography, what would be the title? Perhaps something like The Elusive Quest for Perfection, maybe. Okay, interesting. My biggest weakness. What's the most unusual job you've ever had? I think the job I'm most proud of is right out of college. For a few weeks, months, I actually was a salesman going from door to door in the US, learning the art of being humiliated by people who didn't want to talk to you. I think my personality development, those 2 weeks or 4 weeks or 6 weeks, I've had more than any other time in my life. I What didn't were know you selling? just anything. I mean, it's literally like a hawker on the street. I had some window before I was going to get into my next job or graduate school. I can't remember.
And in the US at that time, at least, if you had a student visa, you couldn't be doing nothing, or there was something like that. But I just took up whatever there was. I didn't know what I was doing. It was just fantastic because I learned how people who are not privileged feel and how you cope with it, and learned never to take anything for granted. It's just fantastic. So now at BNU, I'll tell you, we've started compulsory community service. Okay. We want our students to go out and work with the underprivileged, learn what real Yeah. life is, Yes. right? Yeah. That's the idea. What's your favorite sci-fi movie? Never watched one. Really? Sorry. Not into science fiction. No. So what's your favorite genre then? Horror, thriller? Comedy. The only time I watch movies is to detox and de-stress. Oh, acha. All right. So growing up action, but now very much What's your favorite, comedy. all-time favorite movie? My all-time favorite, I think, is the wrong question. It'll have to be one of the documentaries. But in this space, I don't know. अभी recently Top आपने Gun, कौन सी maybe. देखी? Top Gun? maybe not the new Not one. the recent one, the Yeah, old one, which is the maybe, classic one. maybe. Yeah, it was a Yeah, good movie though. yeah. What's your biggest fear as a leader in education at this day and age? That we have started calling commercial businesses handing out degrees Mm, educational institutions. I'm seeing a whole host of so-called educational institutions who are not interested in education. So being commercial is not the problem. yeah. Being private sector is not the problem. BNU is non-profit, but being commercial is not an issue at all. But not being interested in imparting education and just looking at education as a business enterprise, which increasingly I've seen over time in Pakistan, I think is a huge problem because parents don't really understand what they're getting their kids Yeah. into. They're looking for either the cheapest degree or the whatever, and at the end of the day, it's exploitative. Sometimes even बच्चों को नहीं पता होता, right? They're not sure what they want to do, so they Yeah. just would go for a name or a teacher or a course They name, shouldn't and know then what they want to do when they enter university. yeah, That's exactly the point. The university should expose them to different facets of life, professions, aspects of personality, and then let them choose. यही तो problem है कि either they are dictated by parents कि आप ये कर लें, या उनको बिल्कुल नहीं पता, उनका यार ये सस्ता है, ये करीब है, ये कर लो, हाँ, and yeah, not knowing that education is actually the last time they will have an opportunity to open up their minds to be true human beings. yeah. So पाकिस्तान में बहुत बड़ा problem आ गया कि आप एजुकेशन उसको कह रहे हो जो बेसिकली एक बिजनेस एंटरप्राइज है, Mm. and lot of young people are unfortunately being fooled into believing that a piece of paper called the degree is what education is about. That's just a consequence of what you आज do. हम सुबह एक चीज डिस्कस करते थे, दिस वन यूनिवर्सिटी, उसमें 4 बार वो एंट्री टेस्ट लेते हैं साल में, Mm. and you have to pay for every entry test, right? So is this are they teaching people to, be good at giving tests, or is this a way of making money? Mercantilism. It's just mercantilism. Simple as that. ये अब आपका across the board हो गया, right? मैं हमेशा स्टूडेंट से पूछता हूँ, आप में और जो BNU की दीवार के बाहर अंडर प्रिविलेज्ड एक यूथ है, क्या फ़र्क है? Mm, जो मर्सिडीज़ में आप आ रहे हैं वो तो आपके पेरेंट्स की वजह से है, yeah. जो बाइसिकल पे आप आ रहे हैं वो भी आपके पेरेंट्स की वजह से है। Mm, तो आपने क्या अचीव किया है? एंड द ओनली थिंग आई वांट स्टूडेंट्स टू लर्न इज हाउ टू बी रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बींग्स। उसके बाद प्रोफेशन वो जो भी चूज करें दे विल एक्सेल इफ दे वर्क हार्ड। लेकिन अगर आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट गलत है तो फिर आप आगे नहीं जा सकते। true. So what's the toughest decision you've made at work so far? At BNU, BNU, because it's a more recent. yeah, I mean the toughest decision I make in any job I've ever had is to force people to change at a pace that is unrealistic. So, I abhor the status quo. I just can't stand Hmm. slow change. Now, some change has to be slow. I understand that. But अगर एक realistically चीज change हो सकती है in a day, it must happen in 23 hours. It can't happen in 48 hours. Usually human nature, especially our society's nature, is take it easy. It'll happen. I just feel life is too short. So I make a lot of people I wonder what people uncomfortable. who work with Yeah, you would they say probably about hate me, all but this, that's okay. right? That's okay. It must be tough to work with. I am terrible. Okay, I wouldn't want to work with myself. Trust me. but बेचारे other लोग. Yeah. Okay, moving on to the next segment, which is the present. इसमें we'll talk about your current achievements. You can talk about your previous role as Sure. well, and the current one.
what two to three good things that you feel like you've done for the society or community as a whole related to tech actually? So एक तो मैं बताऊंगा which I am actually quite proud of. I mean, national security advisor जब मैं था, again this conversation about technology ban कर दें, Mm, खोलें, क्या करें. yeah. And I was heading one of the committees of the Prime Minister at the time, which was dealing with international technology firms, largely social media, but others. So, you know, the Googles of the world, I pushed very, very hard to open up space and let them come to Pakistan. Don't, have this arbitrary decision making on. Mm, So it did work. I mean, they're here now. Other companies are here now. So opening up Pakistan to the international technology space yeah. was something I think which is critical even going forward. That's one. The second one I would argue is the use of technology for decision making. So a lot of times in Pakistani institutions, we still have anecdotal decision making. To bring in technology, let people become comfortable with technology, but then also become comfortable with the transparency and accountability it brings. असल Yeah. प्रॉब्लम ये है, राइट? आपकी गवर्नमेंट Mm, पिछले 20 साल से हम ई ऑफिस, ई गवर्नेंस की बात करें, हर हुकूमत आके कहती ई गवर्नेंस हो गई, होने लगी है. वो क्यों नहीं होती? बिकॉज इतने लोग हैं हु नो कि अगर वो हो गई तो फिर मसला तो होगा. फिर अकाउंटेबिलिटी होगी, और वो 2 नंबर अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी. वो तो डेटा आपको बताएगा. तो Yeah. फिर क्या करेंगे? So that part, wherever, whichever institution, although I'm not good at technology, frankly, but wherever I go, I try and push that conversation. So that's, I think, what I would say in terms of technological space. And as a VC at BNU, ऐसे major changes, आपको 1 साल हो चुके हैं ना वहाँ पे. So So in the past 1 year, what kind of like things that you have done, you feel like will improve the standard of education or just the overall experience for the students? um, I think the most important thing I've done is try to push everybody not to worry about exposing your weaknesses. So, I remember when I came in my first weeks, I tweeted and said, um, every university in Pakistan, most educational institutions in Pakistan have a drug problem. Nobody owns up to it because people feel perception. I said, yeah, Mm, mara to hai. And within a year, we're going to fix it. And VNU today is a completely safe space. पहले भी थी, लेकिन mm, issues हर जगह है. yeah. It's a completely safe space. Male, female, drug, this, that, and the other, nothing. Because see, the first promise I make as a vice chancellor to a parent is Mm, that I will offer your child a safe space for education. Right? So own up to a problem, solve it. Now, I am actually asking other universities, take our model and implement it. You don't need to say there's a problem. Just mm, implement it. You'll get to a much better place, right? The other thing we are trying very hard, is to connect vocation with thinking. You want to produce graduates who have the ability to solve problems and a skill set to allow them to advance in their profession. This is a very difficult thing because education systems are siloed. आपने डॉक्टर बनना है तो सिर्फ मेडिसिन पढ़ें, आपने इंजीनियर बनना है वो पढ़ें. वी आर ए लिबरल आर्ट्स यूनिवर्सिटी. सो व्हाट वी yeah. आर ट्राइंग टू डू इज कनेक्ट technology with psychology, with business, with marketing. When you produce a product that is going to be incubated, it is a 360 product. That's what the world, वहाँ से unicorns निकलेंगे, right? Mm, So we are focused on innovation and quality. और ये चीज़ हमारी सोसाइटी को समझनी है कि यूनिवर्सिटी इस काम के लिए होती है. इट्स अ पॉलिशिंग स्कूल. It's not to give a degree. And then we are striving very, very hard to connect with industry, mm, because without industry academia linkage, you are not going to have innovation. हमें yeah. ये नहीं पता वहाँ बैठ के कि आपको चाहिए क्या. आपको ये नहीं पता कि ट्रेन कैसे करना है. So rather than every company picking up students and then training them for a year before they become really employable, it's our job to actually do that. Mm, And finally, perhaps the most important one is that BNU has committed to becoming Pakistan's first certified green campus. So we're doing a huge sustainability drive. We are the only university, I think, that has mandated carpooling for its students. We don't allow okay. students on campus if you don't carpool. We are doing every single thing and now building alliances for campus chapters across Pakistan Mm. for green campuses and climate change and that conversation. अच्छा, आपने बात की ना योर लिबरल आर्ट्स यूनिवर्सिटी, तो परसेप्शन एक बड़ी Hmm. चीज़ होती है, राइट? आई मीन नॉर्मली आई ऑल्सो वाज इन दैट फेज वेयर आई वाज चूजिंग यूनिवर्सिटी, तो पेरेंट्स सबसे पहले कुछ 4 एक चीज़ें Yeah, पूछते हैं. yeah, एंड इस तरह की यूनिवर्सिटी के बारे में जब आप बताते हैं, देयर आर लॉट ऑफ yeah, परसेप्शन ऑब्वियसली, फिर उनके yeah, थोड़े पीपल आर हेजिटेंट. yeah, सो yeah. डू यू फील लाइक देयर इज अ चैलेंज? Oh, huge,
You challenge How them. do you overcome it? We don't. We just keep educating. देखें पॉइंट ये है, लिबरल आर्ट्स जब आप पाकिस्तान में कहते हैं तो पहले लिबरल आधी गाली वो है, और फिर Yes. आर्ट्स के बाद करेंगे क्या जी, ये बच्चा करेगा. पीपल डोंट अंडरस्टैंड, लिबरल आर्ट्स तो एक टर्म है जिसका मतलब है वी विल एक्सपोज यू टू डिफरेंट डिसिप्लिन्स. उसका ना लिबरल से कोई ताल्लुक है ना आर्ट्स से कोई ताल्लुक है. Yeah. एक लिबरल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में आर्ट हो सकता है या नहीं हो सकता. वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग विजुअल आर्ट्स एंड डिजाइन आर्किटेक्चर प्रोग्राम, कई यूनिवर्सिटीज में नहीं होता. द लिबरल पार्ट इज नॉट लिबरल कंजर्वेटिव, इट्स जस्ट एन अप्रोच टू मेक यू थिंक क्रिएटिवली. तो वो तो आप चाहते हैं कि आपके बच्चों में हो, राइट. वी हैव ए थ्राइविंग आईटी स्कूल, we have a thriving business school. We are the only university जिसका google.org के प्रोग्राम के साथ पार्टनरशिप है टू ट्रेन इंडस्ट्री इन साइबर सिक्योरिटी. लाहौर का जो नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर है जो इग्नाइट सपोर्ट करता है, दैट इज नाउ BNU is a lead partner to the consortium, NetSol, Habib Bank, others. वो हम लीड कर रहे हैं. सो दीज आर टैंजिबल. बिजनेस स्कूल वही काम करता है जो बाकी बिजनेस स्कूल करते हैं. सो लिबरल आर्ट्स का मतलब नहीं है कि आपको सिर्फ नौकरी नहीं मिलेगी, आपको आर्ट Yeah. सिर्फ पेंटिंग का. दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव अ फैंटास्टिक स्कूल, लीडिंग स्कूल इन पाकिस्तान जो आर्ट एंड डिजाइन, उसमें भी टेक्नोलॉजी है, उसमें भी प्रैक्टिकल चीजें. सो इट्स अ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल टू एक्सप्लेन कि भाई लिबरल आर्ट्स का मतलब ये नहीं है. लिबरल आर्ट्स का तो मतलब है कि आपकी सोच हम ऐसे करेंगे कि आप प्रॉब्लम्स रिजॉल्व कर सकें, अपने प्रोफेशन में एक्सेल कर सकें, राइट. अब तो वो भी दुनिया के मुल्क यूनिवर्सिटीज जो लिबरल आर्ट्स नहीं है वो भी कहती हैं हम लिबरल आर्ट्स करा रहे हैं. Yeah. बिकॉज दुनिया को अब ये समझ आ गई है कि एक साइलो में रह के आप मसला हल नहीं कर सकते. सो सारी दुनिया की कंपनीज अब चाहती हैं कि आपको मल्टीपल डिसिप्लिन्स का पता हो, एंड दैट्स द आइडिया वी आर फॉलोइंग. वैसे भी यूनिवर्सिटी कोई एक्सपर्ट तो बनाती नहीं है. You can not know things before you get into the job. तो Yeah. फिर बेसिकली Absolutely. तो आपको देखें, जनरल इन्फॉर्मेशन ही होनी चाहिए. BNU का आप एम्प्लॉयमेंट रेट किसी और यूनिवर्सिटी से कंपेयर कर लें, आपको पता चल जाएगा, राइट. वो तो हम्म. प्रॉब्लम नहीं है. हमारा सवाल ये एम्प्लॉय हो कहाँ रहे हैं, कंट्रीब्यूट क्या कर रहे हैं, Yeah. जाना कहाँ है आगे, राइट. Okay. तो वी वांट BNU टू बी प्रोड्यूसिंग स्टूडेंट्स जो जाके दुनिया में पाकिस्तान का अपना नाम रोशन करें, पाकिस्तान में करें, लीडरशिप क्वालिटीज के साथ निकलें, सिर्फ डिग्री के साथ ना निकलें. That's the idea. We're a non-profit. 40% of our students are on scholarship. और Okay. हमारी यूनिवर्सिटी का आई थिंक द बेस्ट थिंग, आई थिंक, और ये मैंने नहीं किया, यू विल फाइंड somebody coming on a bicycle in the same group project with somebody coming on a Mercedes. That's the beauty of Pakistan, जो diversity हमने lose कर दी है. And that's important also, right? To give them that kind of और आप exposure. सीखते किस तरह, और तरीका क्या है. Somebody who's dressed liberally within the cultural context, Yeah. sitting with somebody dressed conservatively Yeah. within the liberal cultural context, those are the conversations that educate you. वहाँ से चीज़ें निकलती हैं. So ये है struggle. लेकिन अगर आप उन पेरेंट्स से पूछें जिनके बच्चे किसी भी लिबरल आर्ट्स इन्वायरमेंट से निकलें, they'll have a very different view because minds have opened up. They're excelling in their profession, but they're also holistic human beings. वो आपसे शेक्सपियर पे भी बात कर लेंगे, उर्दू अदब पे भी कर लेंगे, IT पे भी कर लेंगे. तो Yeah. कॉन्सेप्ट तो ये है ना एजुकेशन का. बाकी तो अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, पेरेंट्स मस्ट अंडरस्टैंड, ये जो टेक्नोलॉजी आ रही है आगे, मैकेनिकल, सिंपल लीनियर मैकेनिकल नौकरियां खत्म हो जाएंगी. You'll have to adapt, and creativity is what's going to make you adapt. So now that we're talking about a future that's going to be very different with respect to employment, how do you think tech interventions while you're studying we can implement them to make sure कि जो बच्चा है जो वो ग्रेजुएट हो तो वो उस तरह की environment के लिए रेडी हो? एक तो पहली चीज़ ये है कि AI को वहाँ इस्तेमाल करें जहाँ काम आए. ईमेलें भी AI से लिख रहे हैं, Assignment. सलाम दुआ भी AI से, मुझे तो लगता है वो भी हाँ, कहीं Eid wishes were also वो like भी AI AI से आ रहे generated. हैं. I don't get an email from a student anymore that's not AI generated. Why? Not because उनको आता नहीं है, but because they say कि यार ये बेहतर है, मैं कोई गलती करूंगा तो यही कर देते हैं. Yeah, yeah. हो क्या रहा है? Unless you write, your mind can't think. That's how human brains Yeah. function. अगर आप सिंपल टास्क पे भी लिखना छोड़ देंगे तो राइटिंग क्वालिटी तो खराब होगी, थिंकिंग क्वालिटी खत्म होगी. जब थिंकिंग क्वालिटी खत्म होगी तो बात खत्म हो, फिर तो यू आर गोइंग टू बी मीडियोकर फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. इसलिए वहाँ यूज करें जहाँ यूज हो सकती है. बट देखें, टेक्नोलॉजी का मैं आपको जनरली एजुकेशन का बताता हूँ. पहली तो बात है एक्सेस टू एजुकेशन. पाकिस्तान जैसे मुल्क में सिर्फ टेक्नोलॉजी दे सकता है. Yeah. यू कैन नॉट हैव 60% ऑफ 25 करोड़ जिनको आप फिजिकली पढ़ा रहे हैं. आपको ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, हाइब्रिड सिस्टम्स लाने पड़ेंगे, ऑनलाइन जहाँ जहाँ आप ला सकते हैं लाने पड़ेंगे. बेसिक टेक्नोलॉजी हर एक को देनी पड़ेगी. कंप्यूटर के बगैर अगले 10-15 साल में आप ह्यूमन ही नहीं होंगे, राइट.
ये ठीक है कि जी वो सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, आप बोल सकते हैं, कर सकते हैं, बट वो स्किल सेट आपके पास होना पड़ेगा। उसके बाद हाउ डू यू यूज टेक्नोलॉजी इन एनी फील्ड यूर इन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप अगर एक राइटर हैं तो टेक्नोलॉजी कैसे यूज करेंगे, अगर एक बिजनेसमैन बन रहे हैं टेक्नोलॉजी कैसे यूज करेंगे, एजुकेशनिस्ट है, वो स्किल सेट टेक्नोलॉजी का अगर आपके पास नहीं है तो गुजारा नहीं होगा। So it's cross cutting. Technology is just like sustainability, it's cross cutting. Every program has to have technology now. And as the VC of BNU, आपने कोई ऐसे new interventions की in your courses and degrees to like कोई upgrade them प्रोग्राम a नहीं bit? है हमारा जहाँ टेक्नोलॉजी नहीं है। एक वी स्टार्टेड समथिंग कॉल्ड BNU कनेक्ट। उसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप एक स्टूडेंट है और आपने एक प्रोजेक्ट बनाना है, Hmm. यू वी विल नॉट एंटरटेन अ प्रोजेक्ट अनलेस आप 3 डिफरेंट डिसिप्लिन्स को इकट्ठा करें। Oh. टेक्नोलॉजी प्लस साइकोलॉजी प्लस आर्ट, टेक्नोलॉजी प्लस बिजनेस प्लस मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी प्लस एजुकेशन प्लस समथिंग एल्स। व्हाई? बिकॉज जब एक साइकोलॉजिस्ट, एक एजुकेशनिस्ट और एक टेक्नोलॉजिस्ट साथ बैठता है, जो गुफ्तगू उनकी होती है, जो प्रोडक्ट वो डिलीवर करते हैं, वो एक डिसिप्लिन से नहीं निकल सकता। यहाँ पे इनोवेशन आएगी। और मेरी इंडस्ट्री को भी ये रिक्वेस्ट है, प्लीज गेट आउट ऑफ दिस लीनियर माइंडसेट। आपने अपने चेक बॉक्सेस बनाए हुए हैं, हमें ऐसा स्टूडेंट चाहिए, वो चेक बॉक्स लगा, उसको उस काम पे लगा दिया। वो Hmm. लीनियर लकीर का फकीर चल रहा है, जो उसको थोड़ा बहुत सिखाया था वो भूल गया, क्योंकि उस थिंकर को आप देते हैं 10 रुपए, लीनियर वाला जो आपके लिए बिजनेस ला रहा है उसको आप देते हैं 100 रुपए, तो एवरीबडी बिकम्स लीनियर। तो आप लोग भी थोड़ा सोचें, यू आर द इंजन ऑफ ग्रोथ, यू आर द प्राइवेट सेक्टर, आप लोग भी अपने उस लॉक जाम से निकले, ताकि हम सारों को आहिस्ता आहिस्ता हाईएस्ट एंड ऑफ द वैल्यू चेन पे ले जा सके। तो व्हाई डू यू थिंक पीपल से कि वो इंडस्ट्री में टैलेंट की जरूरत बहुत ज्यादा है पर जो ग्रेजुएट निकल रहा है दैट्स नॉट गुड इनफ? यू आर सेइंग कि टैलेंट की हम डेफिनेशन क्या है? मेरा ये क्लाइंट है, मैंने हम्म ये कोडिंग करानी है, इसको ये कोडिंग नहीं आती, ये टैलेंट की तो कोडिंग तो मैं ट्यूशन सेंटर से करा दूंगा, मुझे करानी चाहिए। वी आर दी ओनली यूनिवर्सिटी आई थिंक दैट हैज ब्रॉट टेक बूट कैंप्स ऑन इट्स कैंपस, कि आप यहीं पे 4 साल में बूट कैंप भी करा लें तो हम्म रेडीमेड स्टूडेंट निकलेगा। वॉल्यूम आपको चाहिए, मेजोरिटी उधर ही जाएगी, लेकिन वो 5-10% किधर है जिसने लीड करना है, इनोवेट करना है, सोचना है, वो भी तो हम्म कहीं से आना है। तो स्किल सेट का जहां तक ताल्लुक है, आई डोंट थिंक इट्स अ प्रॉब्लम। इंडस्ट्री जस्ट नीड्स टू पार्टनर विद एकेडेमिया। देखिए मैं आपको सिंपली बताता हूँ, एकेडेमिया का प्रॉब्लम क्या है। हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते, मॉनेटरी रिसोर्सेज नहीं है, स्पेशली नॉन प्रॉफिट, राइट। हम आपको क्या कहते हैं, आपको ये 5 स्किल सेट चाहिए, इधर आ जाएं, हम ये टीच करेंगे, आप इंडस्ट्री से फैकल्टी लाएं जो उसको बटरेस करे, और स्टूडेंट रेडीमेड निकलेगा जिस दिन वो ग्रेजुएट करेगा। इंडस्ट्री का जवाब क्या है? हमारे पास तो टाइम नहीं। हम्म तो इंडस्ट्री अपना काम करे, हमारे साथ मिलके एकेडेमिया अपना करेंगे, एंड यू विल प्रोड्यूस व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। आई डोंट थिंक इट्स अ बिग डील। बट यूनिवर्सिटी में भी तो एचईसी की रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपको या मास्टर्स की डिग्री जरूरी या होनी चाहिए, यू हैव टू या उस तरह से। तो आई फील लाइक वी आइसोलेट द एकेडेमिया तो आल्सो। आहिस्ता आहिस्ता देखें, यही रेगुलेशन है ना जिनको खत्म करना है, यही रेगुलेशन। भाई दुनिया में आप डिग्री पूछ ही नहीं रहे, हाँ आप कह रहे हैं जी कि डिग्री नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, आप कुछ कर ही नहीं सकते। हाँ ठीक, तो ऑब्वियसली ये चीज़ आपको आहिस्ता आहिस्ता चेंज करनी है, रेगुलेशन से फैसिलिटेशन पे जाना है। डिग्री ठीक है, आपने डिग्री लेनी है लें, लेकिन फिर उसमें इतने ज़्यादा कदगन नहीं होने चाहिए कि एक स्मार्ट माइंड जो है वो रुक गया और वो आगे चल ही नहीं सकता। सो ये बिल्कुल हम्म ठीक है, करिकुलम के बड़े मसाइल हैं, वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन जो यूनिवर्सिटीज़ तैयार हैं उस बॉक्स को तोड़ने के लिए और डिफरेंट तरह चीज़ें करने के लिए, इंडस्ट्री आए और ट्राई करे, कुछ फेल हो जाए, कुछ सक्सीड कर लें। या ठीक, लेकिन आपको बना बनाया प्रोडक्ट नहीं मिलेगा अपने दफ्तर में बैठ के। यू हैव टू गेट योर हैंड्स डर्टी, कम एंड एजुकेट देम, वर्क विद अस, एंड वी विल प्रोड्यूस समथिंग। इट हैज टू बी अ कोलैबोरेटिव एफर्ट, राइट? बिल्कुल। अल्टीमेटली मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जिस स्पेस में फॉर इंस्टेंस मैं इस वक्त बैठा हूँ, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट। वी आर अ यूनिवर्सिटी ऑफ 2500 स्टूडेंट्स। कोई मुश्किल नहीं है कि हम 30,000 स्टूडेंट ले आए, फीस आधी कर दें, 30,000 स्टूडेंट आ रहे हैं। हम क्या चाहते हैं, वी आर नॉट एक्सपेंसिव, हम बिल्कुल एक्सपेंसिव, वी आर अ नॉन प्रॉफिट। हम ये चाहते हैं कि स्टूडेंट्स वो आए वो आर सीरियस अबाउट एक्सेलिंग, या इसलिए वी वांट टू रिमेन स्मॉल। बट उसमें इंडस्ट्री का रोल ये है कि जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो उनको इंडस्ट्री एक्सपीरियंस कहाँ से मिलेगा। आप वो रोल प्ले करें, एंड अदर्स आर डूइंग इट, एंड वी वांट टू डू मोर एंड या मोर इन टर्म्स ऑफ प्रोड्यूसिंग दैट टैलेंट फॉर यू। ओके। डॉक्टर मित, आपको गाना गाना आता है? नो, you'll sort of lose your ears if I try. हमारा नेक्स्ट सेगमेंट जो है इट्स ट्रूथ। वैसे तो ट्रूथ एंड डेयर होता है बट हमका डेयर हम क्या कैमरे पे कराएंगे? दे प्रोबब्ली विल हैव टू सिंग अ सॉन्ग इफ यू कांट आंसर अ क्वेश्चन। I won't even go close to that. देन यू विल हैव टू आंसर एवरी क्वेश्चन। Pass is an option. नो इट्स नॉट, देन यू हैव टू सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, Don't, I won't even try. विल ट्राई, विल सी। देख के क्या पता आप हो सकता है आंसर कर ले। आई हैव फेथ इन यू बट स्टिल लेट्स सी। आर यू रेडी? चलें?
Have you ever lied on your resume? वैसे तो बड़ा अच्छा resume है आपका, आपको शायद ज़रूरत नहीं है उस पे झूठ बोलने की, but have you ever I don't at think any so. point? I don't think so. Uh, I don't think so. So if you weren't in your current profession, what would you be doing? Playing professional golf. What's the one thing you hate about your job? Human egos. Too many of them at the same time. Starting from 18 years, How do going to you 80 then years. balance it? Yeah. Leadership is just about people management. People's management, if you can't be a leader. And if you're a leader, you better do it. If you could switch jobs with anyone in BNU, who would that be? अच्छा. um, कोई तो होगा जिसको देख के कहते हैं कि ये जॉब होती मेरी तो अच्छा होता. Chairman of the Board of Governors, maybe. Why though? Specific reason? Twice a year, come and say, Mr. VC, you're not doing a good job, and That's see it. you in 6 months. Okay. That's actually not. I'm being unfair, but somewhere there. Okay. Somewhere Achha, there. what's the one piece of advice you would like to give your younger self? Slow down. Enjoy life. It's going to end before you know. अच्छा मुझे लगा शायद आप बोलेंगे कि यूएस में ही रहो वापस मत आओ. No, मैंने आपको कहा ना, that's probably the best decision I made for purely personal family reasons. One should never have any regrets, frankly. If you were a superhero, who would you be? I don't know. कोई तो होगा. I mean, I just I'd probably like to make my very, 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 very imperfect self better. And just that version. I don't know. Mr. Perfectionist. That would be Yeah, that's that would probably be a my new kind biggest of a weakness. superhero. My biggest Whatever you touch, it weakness. becomes perfect. Yeah, that's my biggest weakness. I want it that way. वैसे अगर ये पावर को मिल जाए हमारा भी शायद फायदा हो. आप हमारे systems को भी touch करें आहिस्ता आहिस्ता and then everything will be perfect. If you had a chance to retire today, would you? Yes. क्या करेंगे फिर? Try and get over the guilt of privilege, which I've had all my life, just by accident of birth and more. Yeah. And try and find ways that are fulfilling to give back, which don't have a monetary aspect to them. Who is your role model and why? इस पे पर्सनल जवाब ही दूंगा मैं. Maternal grandfather, because he was the top of his profession in Pakistan as an engineer, GM Dams of Pakistan, overlooked Tarbela and Mangla and blah 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 blah. Died with one Suzuki and half his house sold a couple of years before he died because he didn't have enough money. So if one thing drives me, honestly, that is financial honesty. That's probably the one thing that I want to hold on to more than anything else. Interesting. What's your biggest professional pet peeve? There are only 24 hours in a day and people don't work all of them. Like I said, you're not easy to work with. Oh, I'm terrible. I've told you. I'd hate to I work for feel for myself. your colleagues. What's the most challenging thing about being the VC? Everybody expects you to solve every problem they have. And the nature of problems from 18 years of age to 80 years of age is very different. So I think it's this idea that if you want change, then you must have a solution to everything, which is seldom true. What's the funniest thing that has happened during a lecture? Lecture का तो शायद नहीं बताता, but I'll give you another anecdote. I'm not naturally endowed, I think, with the part of the brain that can appreciate the nuances of art beyond a point. I have to educate myself. It didn't come naturally to me. I'm trying very hard. But BNU has a very strong art and design. So I went to witness an exhibition of our students and faculty. And as I was going around looking and learning, there were two rooms और उसके बीच में एक जगह थी which had no exhibits, but there was this very interesting hole in the roof with a very sort of archaic kind of पुरानी वो सीढ़ी जिस तरह होती है वो ladder, Yeah. and some things hanging from the roof, I think. So I stood there trying to figure out what's the symbolism here. Okay. And I realized that nobody else is there. bothered. Yeah. So anyways, I just stood there and then this gentleman came and said, भाईजान जरा साइड पे हो मैं मुरम्मत कर रहा हूँ. And then I looked around and said, thank God there's nobody here. And I started walking as if nothing had happened. So, one learns. But again, these are all, I actually shared it with my deans. कि यार
this is the leader you have, तो पहले मुझे educate कर लो, फिर बाद में सोचेंगे. Yeah, yes. But you know, so anyway, so I thought it was really But fun. it also shows you were trying really hard at your job, na? कि इतना One has to you look. I have mean, the point is, how can I expect to be respected by colleagues if I don't invest time in learning what I don't know? you passed the test. I mean, अच्छा चलें, I शुक्र thought we'd get शुक्र to hear you sing, but शुक्र. unfortunately. So now moving on to our last segment, future. What do you wish that the future leaders and creators of tomorrow, the youth segment actually, will focus on so that they can actually contribute towards the betterment of the society? Hard work and tolerance for diversity. If we can impart these two qualities and inculcate these two Yeah. qualities in our youth, I think we're in safe hands. मुझे अभी नजर नहीं आ रहा, unfortunately. Neither one. बिल्कुल भी नहीं. Like you think we're struggling in that area a We're lot. really struggling. We're really struggling. And it's not their fault. Yeah. That's the context and environment we've given them. If you were born in 1995 or later, you were Yeah. 6 years when 9/11 happened. Yeah. You've never seen this country peaceful. You've seen this country insecure. You went to schools that were barricaded. You've grown up in a society where corruption is the norm and Yeah. honesty is the exception. You've grown up in a society that's frustrated, that's angry, that will stand, in the middle of the road and start shouting at the other. So this is the context you gave them. You've taught Mhm. them that if you break the rules and law, you'll do better. You've taught them if you're privileged, you can treat everybody else like dirt. तो वाई डू एक्सपेक्ट डिफरेंट आउटकम्स? तो वो तो अब हमारा काम है, Mm. स्कूल्स का, यूनिवर्सिटीज का, पेरेंट्स का. अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स डोंट डू इट एनीमोर, Yeah. सो we have to do that, otherwise obviously फिर वैसे वही. भी I think we need to give more like we need to have more empathy and support for this segment क्योंकि every leader that हम corporations में जब देखते कोई event होता है चाहे गवर्नमेंट का कोई बंदा है सारा जो focus है that's on this youth segment ये बदलेंगे हमारा future right there's a lot of नहीं, बिकॉज हमने responsibility नहीं on ना them बदला. पॉइंट ये, हमने नहीं बदला. अब आप लोगों को कह रहे हैं, आप अगलों को कहेंगे, बिकॉज वी फेल्ड. बस सिंपल सी बात है. yeah देखें, इट्स, हम इस मुल्क में सारा वक्त ये बहस करते हैं कि गाड़ी का ड्राइवर कौन होना चाहिए. उस गाड़ी में इंजन ही नहीं रहा, इंजन ही खराब हो गया है. आप यही बहस कर रहे हैं कि ड्राइवर कौन सा अच्छा है. Yeah. सो अब नजर तो आ रहा है सबको. लेट मी टेल यू, द यूथ ऑफ टुडे find that we have left them in an impossible position. yeah They don't respect us for that, and they're right. And so, we can't just sort of hide behind closed doors and say कि जी ये हो गया, वो हो गया. We messed it up, we've got to fix it. Full stop. और हर एक को अपनी अपनी स्पेस में जितना आप कर सकते हैं आपको करना चाहिए, and see whether that adds up to some change in society. But ये आइडिया कि बाकी सारे खराब हैं, बस मैं ठीक हूँ, everybody in that space, I'm sorry, that doesn't work. अच्छा अभी जो ब्रेन ड्रेन वाली चीज हो रही है a lot of people think oh आई थिंक किसी न किसी एक्सटेंट तक हम इनको एज अ ट्रेटर लेबल करते हैं ना कि आप मुल्क को ऐसी सिचुएशन में छोड़ के बाहर जा रहे हैं बट डू यू थिंक इट्स देयर फॉल्ट शुड दे कोई बी स्टेइंग पाकिस्तानी हियर इस मुल्क से नहीं जाना चाहता. दिस कंट्री हैज समथिंग दैट इट गेट्स इनटू यू. यू cherish it, you love Yeah. it, you die for it. Everybody who leaves out of compulsion. ठीक. So let's look at ourselves, try and fix it. कोई नहीं जाना चाहता अपने मुल्क से अगर वो ठीक हो जाए, और अगर हम ठीक कर लेंगे तो ये लोग वापस आ जाएंगे. कोई रेमिटेंस भेजेगा, कोई वहाँ रह के अच्छी बात Yeah. करेगा. लेकिन इन हालात में it is an impossibility to expect rational people to sacrifice everything and stay and then be treated like third grade citizens unless they're privileged. असल प्रॉब्लम आपका ये है. अगर आप सिर्फ प्रिविलेज ने ये मुल्क चलाना है और अपने लिए चलाना है, और मैं प्रिविलेज कोई सियासी प्रिविलेज या उसकी बात नहीं कर रहा, टॉकिंग ऑफ एलीट इन जनरल, Yeah. तो फिर रिजल्ट आपके सामने एक्सप्लॉयटेटिव है ना बेसिकली. तो बस हर चीज़ उसी मद में आप देख लें. जब तक आप थोड़ी सी एक्विटी नहीं लाएंगे, एम्पैथी नहीं लाएंगे, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन नहीं लाएंगे, तो रिजल्ट यही है. So it's not just the youth. The adults of this country are also equally responsible. जाहिर बात We है. still have so much to do. जाहिर बात है. अगर माँ बाप नहीं एजुकेशन दे रहे कि भाई रिस्पॉन्सिबल सिटीजन क्या होती है, तो फिर कहाँ से आएगी? स्कूल तो रट्टे पे चल रहा है, उसने तो कभी क्रिएटिविटी दी नहीं. जब तक यूनिवर्सिटी आते हैं तो आपकी आदतें पक्की होती हैं, तो वो तो आप 9, 10, 8, 7 इसी पे ही खेल रहे हैं ना, 2%, 5% पे.
तो यस इट्स एन ओवरऑल चेंज। मेरे नज़दीक इकोनॉमी ये सारा होना है। सबसे पहले अपने माइंड को ठीक करवा दें, ये बता दें कि कूड़ा टोकरी में फेंकना है, ये बता दें कि झूठ जब बोलो तो किसी वजह से बोलो, चलो फिर भी माफ़ कर देंगे, बगैर वजह के ना बोलो। और हर चीज़ पे डोंट क्रिएट एन एनवायरनमेंट जहाँ पे लोग गलत काम करें तो सक्सेसफुल हैं, बुरा काम करें तो सक्सेसफुल हैं, टैक्स अपना पे करें तो सारा दिन मुसल्ले पे रोते ही रहें कि अब आगे खाना कहाँ से खाना। Yeah, true. Interesting points. We are moving towards the final segment. एक हमारा tradition है, whoever comes, they have to decide on a giveaway, जो फिर हम एक social media पे competition करते हैं, then people can win it. So आप क्या देंगे? If I would tell you how much money I have in my wallet, I don't think you'd be able to buy, anything from it. So I don't know if I can give you a monetary gift, but the biggest gift I can give anybody is come to BNU, engage with the youth to learn what your society is thinking, and we are happy to give any company, any organization, any mentoring sessions required on how to deal with young employees. अच्छा, मुझे लगा आप कह रहे हैं अगर बीएनयू में से कोई जीता उसको सारे एज मिलेंगे until the end of their degree. नहीं, वो तो फैकल्टी ने देने, मैं उनको नहीं कह सकता। You can still You wish. enforce it. ये भी अच्छे इंस्टीट्यूशन की निशानी है। I wish I could tell the faculty to do this or that. Actually, I don't wish. It's their prerogative. They should. लीडर का काम सिर्फ फैसिलिटेट करना होता गुड। अच्छा, हमारा दिस थिंग जो गेस्ट आता है तो पहले तो वो पिछले गेस्ट का एक क्वेश्चन आंसर करते हैं, देन दे आल्सो लीव अ क्वेश्चन फॉर द नेक्स्ट गेस्ट। वी डोंट नो गेस्ट कौन होगा, सो इट हैज टू बी अ रैंडम क्वेश्चन। बट बिफोर यू लीव योर ओन क्वेश्चन, लास्ट एपिसोड में हमारे पास जूलियन गवर्नमेंट थे, ही इज हेड ऑफ एशिया पैसिफिक एट जीएसएमए। इन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा कि हम इनोवेशन और स्टार्टअप की बड़ी बातें करते हैं, आजकल शार्क टैंक भी बड़ा पाकिस्तान में आने वाला है, तो इट्स वेरी रेलिवेंट। है। तो वो कहते हैं आपके पास कोई एक ऐसी ऐप है, सुपर ऐप दैट द कंट्री हैज प्रोड्यूस, जो आप सब यूज करते हैं फॉर लाइक समथिंग मेजर इन योर लाइव्स। डू यू थिंक वी हैव दैट? फूड पांडा मेरे ज़हन में भी है, और बट क्या? इज इट, डोंट वी हैव एनीथिंग एल्स लाइक जस्ट फूड पांडा? नो, बिकॉज वी आर टोटली कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर सेक्टर। देखें, आपकी सारी ग्रोथ, आपका सारा फोकस इज कंजम्पशन। इस मुल्क के रेस्टोरेंट्स में जाएं तो ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला ने कोई छप्पड़ फाड़ के ऐसे कोई रेवेन्यू सारी दुनिया को दे यस, दिया है मुल्क को यस, कि मतलब कमाल हो गए। वैसे खाने को नहीं है। अगेन प्रिविलेज। या, ठीक, जिसको नहीं खाने को मिल रहा वो भी मौजूद है, आप और मैं देखने को तैयार नहीं है। सो आई थिंक इट्स कंज्यूमर एप्स एसेंशियली एट द एंड ऑफ द डे। इट्स और सैड। दैट इज, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जब तक आप दूसरी चीज़ों का नहीं सोचेंगे, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स की रेजोल्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एकेडेमिया और इंडस्ट्री की पार्टनरशिप से आती है। या, सारी दुनिया में इंडस्ट्री एकेडेमिया के पास जाती है, जी आपके पास थिंकर्स हैं, टाइम है, ये सॉल्व करके दें, हमें नहीं समझ आ रही, राइट? तो वो नहीं होगा तो फिर ये कंज्यूमर मार्केट ही चलेगी। it's a sad answer, although true Yeah. answer, but sad. Is there a question that you want to leave for the next guest, something that you're very... Well, अगर आपके if you have a Pakistani guest, I would really want to understand why the private sector is unable to break through common mediocre products and services to really create top of the line innovation. छोटे छोटे मुल्कों ने कर लिया है, रेगुलेशन की भी समझ आती है, मैं तो खुद कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी इतनी स्पेस है जहाँ मुझे लगता है कि हम वो इनोवेट नहीं कर पा रहे। तो अगर आपके कोई उस तरह के गेस्ट हैं, फॉरगेट जो प्रॉब्लम्स हैं, मुझे बताएं प्राइवेट सेक्टर खुद क्या कर सकता है टू चेंज दैट। एंड दैट आई मीन आई डोंट हैव एन आंसर, बिकॉज एवरी टाइम आई हैव रेज दिस द आंसर इज, वो देखें ना, रेगुलेशन है, गवर्नमेंट है, समझ आ गई। लेकिन आप भी तो कोई 5 आउट ऑफ 10 कर रहे हैं, तो बाकी 5 कर सकते होंगे, वो क्या है? हाउ डू यू डू दैट? कैन यू क्रिएट अ मोमेंट where the regulators are forced to facilitate, क्योंकि उनको एडवांटेज इतना नजर आ रहा हो। इंडिया की आईटी इंडस्ट्री डीरेगुलेशन से नहीं खुली थी। इंडिया की आईटी इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो गई थी कि रेगुलेटर्स को डीरेगुलेट करना पड़ा। तो हम क्यों नहीं वो कर रहे? आई वंडर आपका गेस्ट कौन होगा इतना हैवी क्वेश्चन का जवाब देंगे। बट दिस वाज इट फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू सो मच थैंक डॉक्टर यू, इट्स अ मोहित फॉर प्लेजर। टेकिंग आउट द टाइम। इट्स अ It प्लेजर। was a really fun conversation and I hope everyone who listens in will also learn a lot. We have our audience उसमें काफी young बच्चे हैं, so I'm sure this will be very interesting Sure. for them. So this was it, guys. Thank you so much for tuning in and have a nice day. Bye.